हेलो एवरीवन। आज हम लोग का डे 3 है। इसमें हम लोग कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है उसमें जो टास्क हम लोग को दिया हुआ है उसमें ये कह रहा है कि हम लोग को एक इंटीजर n दिया हुआ है और उस पर हम लोग को कुछ कंडीशनल एक्शंस करना है। अगर n ओड है तो हम लोग को वियर्ड प्रिंट कराना है, और n अगर इवन है और साथ ही साथ ये इसका वैल्यू 2 से 5 के बीच में या फिर 2 या 5 आ रहा है तो हम नॉट वियर्ड प्रिंट कराएंगे। और अगर n इवन है साथ ही साथ इसका वैल्यू 6 to 20 में किसी कोई भी आ रहा है तो हम लोग वियर्ड प्रिंट कराएंगे। और अगर n इवन है और साथ ही साथ 20 से बड़ा है तो हम लोग नॉट वियर्ड प्रिंट कराएंगे। इसको मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ ताकि जो हिंदी में जिनको प्रॉब्लम हो रहा हो वो इंग्लिश में समझ जाए। So in this question, an integer n is given and we have to do conditional actions on it. So if n is odd, then we have to print weird, and if n is even and its value is coming is equal to 2 to 5, then we have to print not weird. And if n is even and its value is from 6 to 20, we have to print weird. And n is even as well as it is greater than 20, then we have to print not weird. So let's come to the programming. Let's code. So if n uh, divide by 2 is equal, sorry, not equal to 0, then then we have to print not equal to 0. Then we have to print, then we have to print weird. And else if we are using else here, if n divide by n modulo 2 is not equal to 0, then it is must that value of n should be even. n डिवाइड बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि ये इवन नहीं है, ये ओड के लिए कंडीशन है। और अगर ये ट्रू नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग का जो नंबर है वो इवन है। सो इसके लिए हम लोग एल्स लगाए, और एल्स में अब हम लोग कंडीशन लगाते हैं इवन के लिए। एन अगर लेस देन और इक्वल टू 5 है, साथ ही साथ एन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, and we will print not weird. After that, थर्ड कंडीशन पर आते हैं। n अगर लेस देन या फिर इक्वल टू है 6 एंड n ग्रेटर देन सॉरी n ग्रेटर देन यहाँ पे होगा, और यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू 20, then we will print weird. इसके बाद लास्ट कंडीशन हम लोग को लगाना है, if n is greater than 20, then we will print not weird. So the code is complete. Let's run it.
सैंपल टेस्ट केस पास हो चुका है। हम लोग फाइनली सबमिट करके देखते हैं। सो यहाँ पे सारा टेस्ट केस पास हो गया है। तो इस तरीके के इस तरह से हम लोग का जो है ये कंडीशनल स्टेटमेंट पर एक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।